Good evening, everybody. Shifali Chopra, your storyteller. It's Friday, 10 o'clock. Dot on. Well, फ़िलहाल मैं इंतज़ार कर रही हूँ कुछ लोगों का हमें ज्वाइन करने के लिए so that we can start our Friday chit chat. I would call it more like a chit chat. No, not really. It's more like a story and fun session. एक तरफ से इंसान बोल रहा है और बाकी लोग सुन रहे हैं. Okay, great. I think somebody is here watching me because I cannot see the name, but I can see that somebody is there, right there. So please just send me a like or a hi or whatever so that I would know who it is. I would love to know who it is. हाँ भाई, जैसे जैसे लोग आते रहेंगे कारवां बढ़ता चला जाएगा. चाहे एक हो या 1000, कारवां तो देखा जाए एक ही से शुरू होता है. 1000, 2000, 5000, मगर शुरू एक इंसान और एक स्टेप से होता है. सो कोई आए या ना आए या लेट आए, नो परवाह. They say life must move on, the show must go on. सो बस वेल मेरा हफ्ता, पिछला हफ्ता कैसा रहा? अच्छा रहा मेरा हफ्ता. आई होप you also had a good week, and now that the weekend is right there, I really wish you a fun-filled weekend with lots of smiles and lots of new things that you can try, and lots of shares. Okay, great. Rajesh sir, yes, now I can see Rajesh sir is watching me. Hello sir. Hi, how are you? I hope all is well there. I am sure it is. I am sure. सो बस अब वेल पिछले 2-3 दिन पहले मेरा बर्थडे था, तो मुझे एक हम लोग सब कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू. येस, आई गॉट लॉट्स ऑफ दोज विशेस फ्रॉम माई लव्ड वंस एंड फ्रॉम माई फ्रेंड्स, फ्रॉम पीपल, इवन फ्रॉम माई स्टूडेंट्स. आई थॉट दैट वॉज फैबुलस. जब बच्चों ने याद किया, आई थिंक दैट वॉज द हाईलाइट फॉर मी, वेरी ऑनेस्टली. क्योंकि बच्चों के पास टाइम कहाँ है, वो भी teenagers के पास. When they started to get connected with me and started to sing happy birthday ma'am, I think that was my highlight. I can tell you honestly, that really was my highlight. तो कभी कभी लगता है कि हाँ भाई चलो अच्छी बात है, kids remember the kind of work that I have been doing with them, so it's always a high. And birthdays is all about celebration, and I think that's one day, whether you say it openly or you don't say it, I think you feel special. It's a special day. But I have an honest confession to make, and the confession is that अब जब मेरा बर्थडे आता है ना, मैं कुछ इंट्रोस्पेक्शन के मोड में चली जाती हूँ. वेरी ऑनेस्टली, आई कीप थिंकिंग ऑफ सो मेनी थिंग्स दैट हैव हैपेंड विद मी और आर हैपनिंग विद मी. और मुझे लगता है कि बर्थडेज इज़ अ गुड टाइम टू रिफ्लेक्ट on where you had started and where you are and where you are going. For me, it was the most important thing. जब हम पेड़ों को देखते हैं तो हम ये नहीं कहते oh this tree is growing old. We never say that. Age is just a number. It's just growing. So are we. We are simply growing in all dimensions. Most importantly, when we grow right from here, अपनी सोच से grow होना मेरे हिसाब से is the growth in all aspects, if you really ask me. Because कभी ऐसा होता है कि हमारी सोच कहीं रुक सी जाती है, and I don't think that's a good idea. सोच आगे बढ़नी चाहिए. कहते हैं इस साल मैंने क्या सोचा, मैं आपको ये बताती हूँ. मैंने सोचा you must do you. And I think that's the most important aspect for anybody else. Why only me? हर इंसान अपने आप के साथ compete कर रहा है, किसी और के साथ नहीं. Competition कोई बाहर वाले के साथ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है. It's your journey and you are going to make it, and you are the protagonist of your story. So it's your competition with your own self.
absolutely yourself. What you were yesterday and what you are today, if there is a difference, that means you're progressive. So, सच पूछो तो मैं सोचने लगी जब मैं छोटी थी तो मैं कैसी थी. So I thought that I must put down some points and talk to my inner self. It's been a long journey and it's still going on. So I thought about it and I wrote to myself. I remember that you were a tomboy, a little girl who used to play with boys. I would dress up just like them and I would want to fight just like them. लड़ना झगड़ना, मैं खाऊंगा इंस्टेड ऑफ मैं खाऊंगी, मैंने बोलना सब उनसे सीखा क्योंकि बहुत सारे लड़के थे और मैं अकेली लड़की उस टाइम. शरारती थी, क्वाइट अ स्टोरी टेलर मैं उस टाइम भी थी. यप्पड़ यप्पड़ यप्पड़. मम्मी कहती हैं कि शायद मैं 1 साल की भी नहीं थी और मैं इतना बोलती थी कि पूछो मत. शुरुआत शायद मैंने करी पापा चाय पी से और आज तक बोल ही रही हूँ. कहानियाँ गाड़ने में तो मैं फैंटास्टिक थी. मुझे लगता है कि बचपन से ही मुझे थोड़ा शौक था. सो आई हैड अ सिस्टर इन माई माइंड. सो आई वुड टेल पीपल दैट आई हैव अ सिस्टर एंड आई हैव अ ट्विन सिस्टर विच आई नेवर एवर हैड. सो कहानी बनाने में मैं बड़ी मास्टर थी. वेल, पढ़ाई में आई वाज सो. मम्मी की बहुत मार खाई है मैंने, बहुत सारी, पढ़ाई को लेके. बट ठीक है, कुछ लोग ढीठ होते हैं. मैं वो ढीठ बच्चा थी. सो मैथ्स मेरा फेवरेट कभी नहीं था. मुझे कभी समझ ही नहीं आया, आज तक नहीं आया. सो आई रियली थिंक that when I speak to my little self and I tell her, it's okay, so what? If you were not good in maths, it's all right. सारी जिंदगी तूने हिसाब थोड़ी ना करना था. कुछ सब्जेक्ट्स में तू फेल भी हो जाती थी, मगर वो फेलियर सच में क्या ये बता पाया कि तू सच में किस चीज़ में एक्सेल करती है. तू रोंदू नहीं थी, हंसमुख थी, बहुत हंसमुख. और somehow sharing is caring तेरा मंत्रा था बचपन से. चाहे टिफ़िन हो, चाहे कुछ पन्ने फाड़ के किसी को देने हो, फट से कर देती थी. If you bought something new, you would always give away something that you already had and something that was in good condition. ये मेरा है कह के तूने जिद नहीं करी. You were a kind child. I always thought you were kind. People understood you as a very caring person. But then at times, people didn't even realize what you were all about. They laughed at you. They thought you were strange. And you looked at them and smiled. And you thought they were all the same. I think your trump card was emotion. You always overplayed it. You really did. But it's okay. I don't think that it was a crime. Please, do not blame yourself. You were just a caring person. Don't blame yourself that you were so kind. Don't think that loving so many people gave you so much grief and pain. Yes, it did. I remember that. But you hid your tears and you smiled. You know, very honestly, what is the difference between a master and a teacher? Master is who has failed many times, where the beginner has not even started. You know, it is so important that you learn from somebody who has kind of mastered in life. I'm not saying I'm the master, but yes, I was a chirpy girl with 2 ponytails. That is true. But yes, I mastered it over a period of time. I just simply mastered it. I realized
that growing up also meant giving up. My thought line was not the same what it used to be. It's okay. I praise you for what all you did. There were times when people said you cannot do it, and you thought you could. But there were times when you started to believe and actually self-doubt yourself that no, I am no good. You went through that challenge of not believing in yourself. It was okay for you to have failed so many times. It was okay for you not to do everything perfectly. You didn't have to be perfect. You were original. But yes, the beauty of you, I will remind you, the beauty was when you ran a race, you always tried to help others as well. You have forgotten that. You really have. You have forgotten the kind of kindness you gave to people. In life, as somebody just said, instead of saying why me, it should be yes, try me. And I guess that was my mantra. It actually became like one. Bring it on. Aane do, hum dekh lenge. But you know what happened? Something changed somewhere. When I started believing that I cannot do it, everything changed then. Something in me snapped there. It did. The self-doubt started to brim up. I realized you were trying to please many people. You wanted to say no, but you still said yes. There were times people didn't stand with you because your thoughts were different. I exactly know that you apologized so many times when you knew it was not your mistake. All those moments that led you to believe that you were not good enough. You lost everything and you started to stare in the sky for all the answers. You did that. I know that. It was not easy. You really bent backwards for others. पीठ टूट जाती तेरी, फिर भी तूने किया जो तू कर सकती थी, अपने बेस्ट एबिलिटी में तूने किया. I know simply a part of you died because you relied on somebody and that somebody left. All those moments that cracked you made you stronger. They say that in Japan, when a pot cracks, like they fill it up with a golden stuff, and they term it like priceless. For me, I can define you as a crackpot, but a pot which is priceless. This was my little message to my little younger self. So I cut there. And I come to the nowness. I'm proud of what I am. I am where I am. And that is exactly where I was supposed to be. No qualms about it. I've learnt the hard way. But what is the result is more important. जब आदमी तप के निकलता है तो वो सोना बनता है. और यही कहानी मेरी जुबानी आप सबके लिए है. हम सब कहीं ना कहीं ज़िंदगी में जूझ रहे होते हैं कि बचपन में मैंने ऐसे किया,
फिर ऐसे हुआ और फिर मैं यहाँ पहुँच गया. Is this where I'm supposed to be? Is this my true calling? Why am I so tough on myself? All these answers keep flooding us all the time. आते हैं, ये बातें आती रहती हैं. But trust me, I'm not perfect, but I'm original. And what is most important is that we're all unique and all original in our own ways. बिल्कुल बहुत शिद्दत के साथ मैं यहाँ तक आई, you know, बहुत शिद्दत के साथ, बहुत 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 मेहनत के साथ. और मुझे लगता है जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है. आहिस्ता आहिस्ता, one step at a time. Nobody has to be perfect. Nobody. And believe me, ये perfection जो है ना, ये मिथ है, सबसे बड़ा मिथ. एक चीज जो मैं हमेशा कहना चाहती थी, what if all this time that we are struggling and they're leading to a beautiful destination? Who knows? What if everything does work out, even if it does not seem like where you are right now? What if who I become is who I needed to become all the time? What if we discontinue all this negative emotion and negative thinking and translate it into a positive mode? You think everything will change? I think it will. And it can change for anybody and everybody. जिंदगी एक सी नहीं रहती मेरे दोस्तों, हम सब बदलते हैं और बदलना बनता है. I believe in growth, right? The growth can be slow, but growth is important. You cannot say मैंने grow ही नहीं होना है. Please surround yourself with dreamers, with people who love you, for people who believe in you, people who care for you. Most importantly, surround yourself with those people who see greatness in you, especially when you have doubts in yourself. It is so important to have the right kind of tribe around you. बहुत ज़रूरी है. हम इन सब चीज़ों को बहुत आम बात से ले लेते हैं. Trust me, when you laugh, कहते हैं ना, the secret of a long life is laughter, but a long lasting relationship is laughing together. So create those bonds, create those connections. And trust me, when you are low, अगर आपको कोई साथ वाला सहारा दे दे, मैं कहती हूँ उस टाइमली की सहारे की बात ही क्या है. मेरे छोटे सेल्फ को मेरे बड़े सेल्फ ने सहारा दिया और बोला कोई बात नहीं, फेल हो गई तो क्या, सारी जिंदगी फेलियर थोड़ी ना रहेंगे. गिरे तो क्या, गिर के उठ भी सकते हैं और उठते हैं. हमने अपना माइंड सेट बदलना है. आई हैव टू बी काइंड टू माई यंगर सेल्फ. बी काइंड टू द पास्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ that didn't know the things you know today. हम सब एक सोच के साथ पैदा नहीं हुए थे. सोच बदलती रहती है. जो चीज़ मैं 5 साल 10 साल पहले कहती थी वाह, आज वो चीज़ शायद मेरी जिंदगी में नहीं है. इट्स ओके. मैं नहीं कहते ना ओ आप बदल गए. अरे बदलना ज़रूरी है. कोई चीज़ जो मेरे को प्रोग्रेसिव वे में आगे ले जा रही है वो अच्छा बदलाव है, और कोई चीज़ जो मुझे पीछे ले जा रही है वो बदलाव हमें नहीं चाहिए. आई नो देयर आर टाइम्स व्हेन योर ओन पीपल डोंट अंडरस्टैंड यू. इट्स ऑल राइट, गिव देम सम टाइम, बट you be happy about yourself. You be happy about how much you have invested in yourself. You be sure of yourself. Trust me, the day you start accepting for who you really are and you are most comfortable in that skin of yours,
trust me, people around you will start loving you and respecting you for who you really are. कई बार लोगों को समझ नहीं आता कि ये स्टोरी टेलर क्या होता है. कहानियां सुनाना, इसमें क्या बड़ी बात है? मोटिवेट करना, ये भी कोई काम है? बड़ा मुश्किल था. कैसे बोलूं कि हाँ भाई मुझे पसंद है. लड़ा, झगड़ा किया, फिर रियलाइज किया, नॉट वर्थ इट, नॉट वर्थ इट एट ऑल. When they will see me happy, they will understand that yes, this is not, she's not experimenting to be different. She's just extending herself. And the minute your passion becomes an extension of you, I think you become the real you. I think you start to love yourself, embrace yourself. जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करते, कोई दूसरा आपको प्यार नहीं कर सकता. लोग आपको छोड़ेंगे. और मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि शायद मैंने वक्त लेकर अपने आप को प्यार करना सीखा. It took time, but I made it. Definitely made it. अब बार बार मुड़ के जब मैं अपने आप को देखती हूँ और मैं कह सकती हूँ, this birthday, this is what I have learned, that yes, I am a storyteller, a motivational speaker. I have emotions and I deal with them every day of my life. I'm a human being first. उतार हैं, चढ़ाव हैं, हैप्पी डेज हैं, सैड डेज भी हैं. बट यस, सैड डे वाले दिन ये बात मालूम है, दिस टू शैल पास, ये दिन भी गुजर जाएगा. रोते हैं, रो लेना चाहिए. रोना सेहत के लिए अच्छा होता है. बट रोने के बाद हंसना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है. और कहते तो वैसे भी नहीं करते, फेक तो हम दूर दूर नहीं हैं. आज एक छोटी सी कविता कुछ दिन पहले लिखी थी मैंने, आपको पढ़ के सुनाऊंगी. और उस दिन मुझे लगा कि मैं आजाद हूं. क्या मैं सच में आजाद हूं? तो दिस इज अ गिफ्ट टू माई ओन सेल्फ फॉर माई बर्थडे. Close to my birthday is when I wrote this. So I think I have gifted this little poem to my own self. इस भीड़ में अगर तू सुन सके खुद की, तो तू सच में आजाद है. सपने बुन अगर कर सके अपने मन की, तू सच में आजाद है. आजाद है तू जब कह सके जो मन में है तेरे. बनावटी मुस्कान फेक, सच में तू हंस के देख, तू सच में आजाद है. इश्क है तो कह दे, हाँ कह दे मुझे मोहब्बत है, तू सच में आजाद है. निकल पड़ बनकर परिंदा तू, आसमां छू ले, तू सच में आजाद है, तू सच में आजाद है. So when I wrote this, I wrote it not only for myself, I wrote it for everybody out there जो कभी आज़ादी को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं. So प्लीज आज़ाद रहिए. यहाँ से कहते हैं ना कि जो पढ़ाई आप सीखते हैं वो आपके काम आती है, मगर यहाँ से जो सीखते हैं ना वो अलग है. It comes in your attitude. It shows in your actions. It is not what you say. It is what you do. It is what you do, my dear friends. It is truly what you do. So this was a little session from my side. I was actually still in that mode of celebrating my birthday.
So I think this was a nice thought line that I wanted to share with all of you कि पीछे मुड़ के देख और आगे बढ़. जो गलती तूने की है कोई बात नहीं, इंसान है, करेंगे, आगे बढ़. इंसान अगर गलती नहीं करेगा तो वो सीखेगा कैसे? हमारे ही हाथ में वो कलम है और हमारे ही हाथ में वो इरेजर है जिसे हम इरेज कर करके आगे निकल सकते हैं. ट्रस्ट मी, जब सब कुछ हमारे हाथ में है तो पछताना कैसा? आपको कोई चीज अपने बारे में नहीं पसंद, फाड़ो, आगे बढ़ो. वी आर नॉट अ ट्री, वी कैन मूव एनीवेयर. We don't have to believe that this is where we have to be. No. My favorite thing to say at all times, we are the editors, writers, protagonists, directors of our own story. Please avail this opportunity to rewrite your story if you are not happy. And trust me, zindagi mile na dobara. So this was it, my dear friends, and I saw a lot of people come in. Great Swarleen, Rajesh sir, Neeta auntie, Sukhi, Jaideep Mengi, Indrani dear, thank you. Muninder Anand, thank you so much for coming and watching me, and I can see so many fantastic comments that you have given us. Neelam ji, Bahiu from Maldives, Nida, hi Sakshi, hi Jyoti. I'm glad you could make it. And who else? Wasim, Swaratmika, hi Momo. So anyhow, thank you so much, my dear friends, to come and listen to me. I hope this story of mine, which was a little differently placed the way I normally do stories, I wanted to do a different stroke this time. I really hope I can inspire more people. That's all I want. कि मेरी कहानी से अगर कोई सीख ले, इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती. That will be like the perfect birthday gift for me. अगर ये कहानी सुन के 2 लोग भी अपनी ज़िंदगी का तरीका बदल लेते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी. Make your own sunshine. Lots of love. Bye for now. I'm going to see you next Friday. Take care. All the best. Bye-bye. Make your own sunshine.